The very first thing that we're going to discuss is kinetic particle model of matter. Kinetic particle theory आप लोगों ने पढ़ी होगा, which was based on Brownian motion. Brownian motion ने हमें क्या बताया था? There were a few points जो on the way इसमें आ जाएंगे. Distinguish between properties of solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas की properties अगर हम superficially discuss करें, जो बुक में टेबल भी आई विल शो टू यू एट व्हेन विल मूव टू द बुक. सॉलिड क्या होता है? फिक्स शेप होती है. टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बोथ ऑफ देम. और इनका क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है. इसका क्या होता है? कुड मूव विद इन द वेसल, कुड मूव अराउंड completely Free. without any bound to the beaker. हमारे पास ठीक हो गया. बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, एंड वो विल गो बैक टू दैट और उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अगर हम डेंसिटी की बात करें, सो मोस्ट डेंस होता है. एंड व्हाई इज दैट? कॉज लेस डेंस एंड लीस्ट डेंस होता है. इन कॉन्टेक्स्ट टू द डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम के में बात होगी हमारे पास, ठीक है. बिकॉज दे टेक अप वट एवर द वॉल्यूम देर इज अवेलेबल. और इस वजह से उसके अंदर जो है डेंसिटी इनकी मिनिमम होती है. एक और मेजर पॉइंट जो इसके अंदर आता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इसका, इन दोनों का. दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और दे कुड टेक, या इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, हम ये लिख देते हैं. लेट्स नॉट राइट अ बिगर सेंटेंस, बिकॉज वट एवर द स्पेस इज अवेलेबल, gases उसको टेकन कर लेते हैं. You know the term for the change in the state between solid, liquid, and gas. Solid to liquid and liquid to gas transfers are not required. तो solid to liquid हमारे पास क्या होता है? What do we call it? Melting. We call it melting and boiling or evaporation. And if we go back, तो ये क्या होता है? Condensation. Condensation And liquid to solid or is freezing. Freezing. freezing, or we could also call it solidification. The one thing that we need to keep in our mind is that the temperature remains constant. The temperature remains constant because during this, बल्कि लिख देता हूँ, during the change of state. And why is that? Because all of the energy is utilized in breaking or making the bonds. बिकॉज अगर हम सॉलिड टू लिक्विड जा रहे होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, लिक्विड टू गैस होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, एंड व्हेन वी गो इन रिवर्स तो द ऑपोजिट हैपेंस, मेकिंग में आ जाएगा हमारे पास. सो ऑल ऑफ द एनर्जी विच इज गिवन टू इट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज while दिस इज हैपनिंग. तो इसके अंदर आप हमारे पास, सो whenever a question comes तो आपने ये डिस्कस करना है कि the temperature remains constant during the change of state because all of the energy that is being given is utilized to break the bond between the particles. Then comes describe the particle structure of solid, liquid, and gas in terms of arrangement of separation and motion of the particles. Separation क्या होती है?
वेरी मिनिमम स्पेस होती है और वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स होती है लिक्विड्स में, कंपैरेटिवली लार्जर स्पेसेस होती हैं, गैसेस में ऑलमोस्ट जो है कंप्लीटली फ्री होते हैं टू मूव। मोशन में हम वही डिस्कस करेंगे। दे वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन फॉर सॉलिड, फॉर लिक्विड दे कुड मूव अराउंड इन द लिक्विड, और गैसेस में दे आर कंप्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर। Represent these states using simple particles diagram. वो I'll show you in the group in the book. We have this course section, supplementary section. Normally, we go for paper 2, 4 and 6 में हम ये section को follow up करते हैं। paper 1, 3 and 6 तो common ही रहता है। 1, 3 and 6 में हमारे पास course syllabus होता है। It's easier। फिर this is a new topic, absolute zero. It's considered as -273 degrees C. Absolute zero is the temperature at which the kinetic motion of the particle ceases. Kinetic motion of the particle, स्टॉप्स भी कह सकते हैं, सीज भी कह सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बेसिस पे ये डिस्कस किया हुआ है कि the particles remain in a state of motion whether it's solid, liquid or gas, but at -273 degrees C all of the kinetic motion becomes zero. They have zero motion and zero resistance होता है उसके अंदर at -273 degrees C. Do we understand what do we mean by the absolute zero? Yes. Then we have described the pressure and change in pressure of a gas in terms of the motion of its particle and collision with surface area. We know that the pressure is directly proportional to the kinetic energy of the particle. So if pressure increases, the kinetic energy of the particle increases. If pressure decreases, the kinetic energy of the particle decreases. And collisions obviously क्या होगी? Lesser होगी. ठीक है? Because when the kinetic energy of the particle is maximum, collision between the particles would also be maximum. फिर उन्होंने कहा है डिस्क्राइब, अच्छा ये हो गया। Know that the random motion of microscopic particles in a suspension is evidence for the kinetic particle theory। वो ब्राउनियन मोशन की बेसिस पे हम लोग इसको बात करेंगे। वो you might have studied in sciences as well or in the previous class। पोलन ग्रीन एक्सपेरिमेंट एंड स्मोक पार्टिकल्स वाला एक्सपेरिमेंट दोनों डिस्कस हुआ था उसके अंदर हमारे पास। ठीक है, we'll go into the detail of this and when we'll actually study the topic. uh, Brownian motion basically justifies the continuous motion of the particle हमारे पास in solid, liquid and gases. Then comes know that the force and distance between the particles and motion of the particles affect the properties of solid, liquid and gases। इसमें हम compressibility को discuss कर सकते हैं। We know that solids are incompressible, and the reason behind that is that there is almost or very less forces spaces between the particles, वैसे वो compressible नहीं होते हैं हमारे पास। Then liquids somehow slightly compressible होते हैं, cause मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कंप्रेसिबल सब चीजें ही होती हैं हमारे पास। मोस्ट कंप्रेसिबल हमारे पास कौन से होंगे? गैसेस Gas. जो हैं, बिकॉज उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से दिस वुड। अब क्लियरली फोर्स एंड डिस्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। इफ फोर्स सॉरी इनवर्स है। इफ फोर्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस किस में होती हैं? सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस। सॉलिड, then liquid, then gas, intermolecular forces। सो फिर डिस्टेंस सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इफेक्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एक इजीएस्ट फॉर्म है हमारे पास, और वॉल्यूम और डेंसिटीज को भी हम डिस्कस करते हैं ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसका द प्रेशर चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ये उन्होंने पॉइंट रिपीट किया हुआ है सप्लीमेंट्री में भी। दिस इज द सेम पॉइंट। नो दैट द माइक्रोस्कोपिक, ये वाला पॉइंट भी उसमें सेम ही है कि
Atoms and molecules, we know the difference between atoms and molecules. Gas, do we know the difference between the atoms and molecules? Yes. What is atom? Which cannot be? At- Which cannot be broken down into simpler Hmm. substance, and molecules are basically a group of atoms joined, bonded together. Yes. कहाँ गया वो पॉइंट? अच्छा वो वहां पे. दोनों हमारे पास प्योर ही होते हैं. कोई उसमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई और टाइप ऑफ एटम एडेड नहीं होता. कंपाउंड्स में होते हैं. इवन एलिमेंट इज प्योर. Gases and absolute scale of temperature. Gases, this is the absolute scale of temperature हमारे पास, जिससे हम कन्वेयंस करते हैं टेम्परेचर के अंदर. और qualitative, described qualitatively in terms the effect of pressure on a fixed mass of gas, a change of temperature at constant volume, a change of volume at constant temperature. If the temperature is kept constant, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? Volume same रहेगा. व्हाट अबाउट प्रेशर? If the pressure increases, the volume decreases. वॉल्यूम कांस्टेंट है. प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास. ठीक है. When the temperature would increase, the pressure would increase, but since we have to keep the volume constant, so volume, if volume is kept constant, that is particles are not allowed to move anywhere. ठीक है? Because the kinetic motion is directly, temperature is directly proportional to the kinetic energy, or we could also say temperature is directly proportional to the internal energy. Internal energy हमारे पास क्या होती है? It is defined as the sum of all forms of energies. It contains both kinetic energy and potential energy. Kinetic energy तो basically we know ना कि movement of particles की वजह से होती है. Whereas जो potential energy है, it is due to the position of Weight atoms. and ठीक है हमारे पास. फिर this is the temperature conveyed होती है from degree C to Kelvin. Degree C temperature plus 273 would convert into Kelvin temperature. Then this is known as Boyle's law. Boyle's law states that pressure and volume are inversely proportional provided temperature remains constant. So अगर हम उसकी equation लिखें, pressure is proportional to inverse of volume. When I remove the sign, I will have a constant over V, and from here we could have this equation that product of pressure and volume is constant for a at a constant temperature, and this law is known as Boyle's law. Do we understand up till here? Yes. Is there any point you want me to repeat? no. Oh,